A very good morning to all of you. ये हम अभी जो सुन रहे थे 7 चक्रास को हील करने के लिए। हमारे चक्रास जब एक लाइन में होते हैं, that helps us to lead a very beautiful life, चाहे इमोशनल बीइंग हो, फिजिकल बीइंग हो, चाहे स्पिरिचुअल बीइंग हो। तो ये चक्रास ऐसे लाइन में होते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। व्हाट डू वी डू जब हम चक्रास की मेडिटेशन करते हैं? क्योंकि हमारे चक्रास, हम दिन भर में बहुत सारी चीजें अच्छी गलत सब सोचते हैं, तो थोड़ा सा भी इधर उधर होते तो चक्रास फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में होने चाहिए, वो इधर उधर हो जाते हैं। सो टू ब्रिंग इट इन वन लाइन, कि ये अलाइनमेंट में हो जाए, वी डू दिस चक्रा मेडिटेशन। इसके साथ कलर्स एसोसिएटेड थे, हर चक्रा का एक कलर था, और उस कलर को लेकर अपने आंखों के सामने उसको मेडिटेशन करना होता है। आई एम श्योर इफ यू हैव डन विद मी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली वर्क्स। ये चक्रा मेडिटेशन बहुत लंबा भी होता है। ये सिर्फ 7 मिनट का ही रखा था आज जो अपन ने किया। या विल शेयर, सुनीता जी, आई शेयर दिस इन ग्रुप। और आप लोगों को समय मिले जिसको चक्रास के बारे में नहीं पता, आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़िएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव होगा कि क्यों करें हम इसको, करने से क्या होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है अपने लाइफ। इट्स वेरी सिंपल। वी विल डू वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड एंजॉय लाइफ। दिस इज हाउ थिंग्स आर एंड आई बिलीव एंड इट इज हाउ इट। मतलब बहुत बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं करनी है। आज अपन ग्रेटिट्यूड की भी बात करते हैं। बहुत छोटी छोटी से बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट्स ऑल, राइट? सो हम ऐसा करेंगे। ग्रेट। बिफोर वी मूव फर्दर, कल वाली प्रैक्टिस किस किसने करी? हाउ मेनी ऑफ अस डिड दैट प्रैक्टिस, यस्टरडेज प्रैक्टिस? मैम मैंने किया। वेरी गुड सुषमा जी। आपने जिसके लिए भी किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। चाहे वो आपके सामने है, चाहे वो आपके सामने नहीं नहीं है, है। यस मैम, मैंने किया। राइट?
लास्ट टाइम तो नहीं किया था, लेकिन दिस टाइम मैंने सारी एक्टिविटीज करी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यू सी डियर वंस, आपकी जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो एकदम अलग होंगे जब वी व्हेन वी लर्न डूइंग दीज थिंग्स एंड व्हेन वी डू। सो डूइंग, जैसे जैसे कि लाइक आई एम अ टीचर, राइट? आप इमेजिन करो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने आपको सबको बताया कि देखो आजकल साइकिल आई है और साइकिल बहुत अच्छी होती है चलाना। तो आपने कहा कैसे चलाते हैं? पहले तो शायद वीडियो नहीं बनते थे। अब मैंने एक वीडियो लेके आ गई आपको सिखाने के लिए कि देखो बंदा वहां बैठा है, उसने ऐसे पकड़ा है, ऐसे बैलेंस किया है, ऐसे साइकिल चलाई है। उसकी जगह हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। आपके जहन में कौन सा वाला नॉलेज रह जाएगा? या आप जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, आपने पहले साइकिल चलाई होगी, अब नहीं चलाते हैं। बट बिलीव मी, आप साइकिल हाथ में लेंगे ना, कुछ समय के बाद आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नॉट मच ऑफ एफर्ट नीडेड। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? एनीथिंग ओनली सेड doesn't last for long. Anything which is done, that would last for long. Anything which shown would be there for some time. If I tell you, अभी आप आज डे 13 है, डे 12 तक आप क्या करते हुए आए हैं, राइट? क्या क्या पढ़ा आपने? तो उसमें से कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें याद नहीं। बट when you do things, things are altogether different. So therefore, doing these small practices will help us. Why? You see, आपको मैं एक चीज हर बार याद दिलाती हूँ। फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस, फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस, यदि मैं नाम लूं उन प्रैक्टिसेस का, क्या थी? काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और थी। द मैजिक रॉक, मैजिकल रिलेशनशिप्स जो आपके अच्छे नहीं हैं, या मैजिकल रिलेशनशिप्स क्यों अच्छे करने चाहिए। हेल्थ, मैजिक हेल्थ। देन मैजिक मनी, वर्क्स लाइक मैजिक, यानी आपके आपके काम के बारे में। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, पुरानी कोई चीज है उसमें से कैसे निकलना है, कैसे सिखाया हमको। द मैजिक इंग्रेडिएंट, कि अपने अपनी लाइफ में उसको कैसे डाल सकते हैं। मनी मैग्नेट, मैजिक डस्ट एवरीवन, अ मैजिक मॉर्निंग, ऑलरेडी जो है मेरे पास उसको याद करते करते मैं चल रही हूँ। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, ये मैजिकल पीपल कौन से हैं? जो अब तक मेरी लाइफ में आ गए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये सारी प्रैक्टिसेस वर टॉकिंग अबाउट योर व्हाट यू हैड इन पास्ट एंड व्हाट यू हैव, एंड शोइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। वो सिखाया कि कैसे इन छोटी छोटी चीजों को देख के ग्रैटिट्यूड करके हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। राइट नाउ, आज से लेकर आज से लेकर I mean, I think 10 practices ऐसी हैं जिसमें we can fulfill all our desires, all our dreams. आज से लेकर देखिए कितने प्यारे तरीके से ये चीजें बनी हुई है उन्होंने, रोंडा ने, द वे शी हैज मेड, आई रियली लव इट। सो देयरफॉर, आप में से किस किस ने करा कल? एनीबॉडी? नीलेश जी? जी मैंने किया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ वाज इट फॉर यू? सो नाइस मैम, इतना अच्छा लगा ना उसके बाद में, वेरी बहुत गुड। रिलैक्स, बहुत अच्छा फील हुआ। अब देखो, जो अपन जिस फीलिंग को रिलैक्स्ड कहते हैं, हम जिस फीलिंग को अच्छा कहते हैं, वो क्या है? यू सी, वो हमारे थॉट्स को चेंज कर दिया, हमारी वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। आप कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, उसमें जाके आप अट्रैक्ट करके आ गए। इसलिए कहा जाता है, जब भी आप बहुत खुश हो ना, बहुत हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन पे हो ना आप कभी, तो हमें वो जो चाहिए ना उसको याद करके विजुअलाइज कर लेना चाहिए, वो जल्दी हो जाता है।
This is how it is said. Very good. Keep it up, sir. उसमें Anybody उसमें else? मैम हाँ. आपको और हरीश सर को भी मैंने किया। Very good, sir. Thank you. Thank you so much. Anybody else who did this? Thank you very much. Anybody who did this? You see, dear ones, as I said, बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए. So, एक important चीज जो मुझे एकदम जहन में आई है, when we use this word thank you, just check yourself. किसी को नहीं बताना है. We will check ourselves. मन से निकला, भले वो कुछ सेकंड्स के लिए होगा. ऐसे थोड़े ना कि आपके को किसी ने कुछ कहा तो आप आधे घंटे तक थैंक यू में ही रहोगे, उस ऑ में. But you will feel good, and if you have used all your feelings, isn't it? जैसे I'll do one exercise, one activity करती हूँ मैं आपके साथ. हाँ, फिर उसका मुझे जवाब भी दीजिएगा. कैसे करना चाहिए तो पढ़ना बात करते नहीं, पता ही नहीं कहाँ कैसे 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 करते रहते. तो अच्छा ऊपर करो, नीचे करो, कैसे करो, आगे करो, बाएं करो, और फिर चलते चले जाओ. क्या था ये? क्या था कि अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा था? Didn't know. Very good. At least कुछ तो बोले. Very good. और क्या? Mumbling. Very good. और क्या? सेल्फ टॉक। Sorry? सेल्फ टॉक। Okay. नहीं, आपके लिए क्या था ये? आपको क्या लगा? समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया? मैं कितनी अच्छी से नहीं बताया आपने? समझ नहीं आया। नहीं नहीं समझ समझ आया। नहीं समझ आया. अच्छा, मैं इस नहीं समझ वाली चीज को 10 मिनट तक करती रहूं तो फीलिंग क्या होगी? मतलब मैं, आप सब लोग बैठे हैं और मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं समझ ही नहीं आ रहा. अब मेरे अंदर क्या होगा? कंफ्यूजन. और क्या? थोड़ी देर के बाद इरिटेशन. Isn't it? मैं क्यों कर रही हूं ये, माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग जब क्लियरली अपनी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं ले जाते हैं, तो जैसे मेरी आवाज, मैं एक सर्टेन वाइब्रेशन पे लेके आ रही हूं मेरी आवाज, तो आपको सुनाई दे रही है, और ये दो चीजें मैच कर गई. अब मेरी आवाज जब आपको सुनाई नहीं दे रही है और आपकी लेवल पर मैच नहीं कर रही है, तो चीज हो रही है, आपको सुनाई दे रही है नहीं. सेम इज द केस. मेरी विशेस, मेरी डिजायर्स, और कुछ भी छोटी सी छोटी चीज, मैं जब तक उस लेवल पर वाइब्रेट नहीं करूंगी, आई विल it will be very difficult for me to achieve that, get that. So therefore, उस वाइब्रेशन पे आने के लिए आई विल रिपीट दिस. जब जब आप मेरे से मिलेंगे मैं तब तब ही रिपीट करूंगी, क्योंकि हम इसको भूल जाते हैं कि हमको वाइब्रेट करना पड़ता है उस लेवल पे, और उस लेवल पे वाइब्रेट करने के लिए मुझे वो माइंडसेट में जाना पड़ता है. उस माइंडसेट में जाने के लिए मुझे ये प्रैक्टिसेस और ग्रैटिट्यूड चाहिए. Right, dear friends? You will remember this. We will remember this. Okay. कल की जो प्रैक्टिस थी, मुझे इसमें एक और चीज बहुत अच्छी लगी थी कि हमें बहुत सारे जिन्होंने भी करा, आपको बहुत सारे लोग याद आए. तो उन लोगों को वी विल मेक अ हैबिट, मैंने उस दिन भी शायद कहा होगा, वी विल मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग ईदर अ थैंक यू नोट और अ थैंक यू मैसेज. जिसने भी मेरे लिए जो भी करा है, complete sentence लिखेंगे my dear. Thank you, thank you, thank you. For what? I'm so grateful to you. For what? For जो भी उसने आपके लिए किया. Right? So, like जैसे yesterday I went out. So it was a very new place and I did not know anybody. तो पहले तो मैं बैठी रही, तो बाद में एक बहुत acquaintance, I mean she's not a very good friend also, we just know each other. And she came, I saw her. I mean बहुत सारे अलग लोग थे.
And then she came and sat with me and I had a good company with her. ऐसे smile pass कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सबसे. We all know how to be in a social circle, right? But एक आपको एक बैठ के बतियाना मजाक करने के लिए कुछ चाहिए ना. So I met that girl. And then after that, we really enjoyed talking on different topics and then enjoying the thing, whatever was happening. I came back, I wrote, I'm so grateful. She was there. I had a better time. I might be having good time, but I had a better time. Right? So I sent a thank you to her. I really enjoyed with you. मैं आपको ऐसा मैसेज भेजती हूँ, how will you feel? I really enjoy with you all, my dear friends. एक मैंने ये सेंटेंस बोला, I really enjoy with all of you, my dear friends. एक सेकंड के लिए लगा आपको, चला जाएगा. इसकी जगह मैं बोलती हूँ, Nisha ji, I really enjoy with you. I really love to see you on the screen. Nikita ji, I want you to see. मुझे मजा आ जाता है आपको देख के स्क्रीन पर. Thank you so much. सुषमा जी, आपकी शेयरिंग के लिए तो मजा ही आ जाता है. Jatin sir, for your help every time. Manisha ji, for reading so beautiful. एक एक को जब मैंने अलग कहा, वो और मैंने एक सबको कहा थैंक यू. किसमें फर्क है? बोले साहब, किसमें फर्क है? जो लिख के भेजा हो. जो लिख के भेजा, जो इंडिविजुअली बोला. Isn't it? Yeah. So please do that. Okay? चलिए. Start करते हैं आज का सेशन. Anybody who would help me with reading part? I'll just share. कौन पढ़ेगा? Beautiful chapter practice called Call Me, Call Your Wishes Come True. Anybody? चलिए. Nobody? Okay, I'll read. देखिए, make all your wishes come true. You can see this picture. In this picture, you see something में बहुत कुछ है. A staircase है, a court है. कोर्ट में से एक जगमगाती हुई चीज पीप आउट कर रही है. What is that? कुछ पेपर है. पेपर में क्या लिखा है? What is written on this paper? Your wishes, your desires. Then only we can make all our wishes come true. आंखें बंद करिए. भगवान जी ने आया, आपको बोला 1 मिनट में मुझे बता बच्ची क्या चाहिए. जिसको पता है उसने तुरंत से बता दिया. बाकी 2 मिनट सोच रहे. भगवान ने कहा मैं 1 सेकंड के लिए आया हूं बस. मेरे पास और जगह भी जाना है. आपको जो मांगने मांग लो. किसकी विश जाएगी उस पाइपलाइन में? जिसकी विश तैयार है. ओके. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, writer. Imagine तो हम सब करते हैं. All of us imagine. The whole day we imagine. Let me see how long is this chapter. Okay. So we all imagine. But आप देखिए imagination most of the time कैसी वाली जाती है, बाद में बताइएगा जरूर. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. जितनी भी practices हो गई dear friends. अब आपकी एक foundation सच्ची में बन गई. Look yourself on the first day and look yourself today. It is better, right? Today we have learned few techniques to be in gratitude. But today is an exciting day. Why? Because from today, we are going to use this gratitude come magical power to get our things and dreams and desires fulfilled. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it.
creating elaborate ceremonies to put as much as energy they could into giving thanks. अपन सब पूजा करते हैं तो इतनी सारी रिचुअल्स क्यों करते हैं? नवग्रह बनाते हैं, जो भी जिस तरह की भी पूजा करते हैं, and then we have certain rituals, and then when we have certain rituals, हाँ सुनीता जी? Ma'am, I'll read it in case you need Oh someone yes, to I read. would love it. I would love it if you will read for me. ये वाला ये आप यहाँ से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पढ़िएगा, राइट माय डियर? मैं इसको खत्म करती हूँ बीच वाले को. So now, when we do certain things, what would happen? Why are we doing it for certain time? Again, why are we writing 10 blessings? Why is it not that within 1 or 2 which is done? To get into that energy. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks. Thanks before having received what is desired. My dear friends, एक नया खजाना खुला हमारे लिए आज. वो क्या है? अब तक तो हम हमारे पास जो चीजें थी, whatever we had in our life, we gave thanks for that, right? But now, from today, we have got one more, a magic wand where we can get those things done which we have not done or which we want them. Like, अभी जैसे ये बता रहे Egyptians, they danced before the Nile River was filled. Why? River is very important, उनकी lifeline है. But भरी नहीं है. उसके पहले उन्होंने उसके लिए thanks देना शुरू कर दिया. So, for anything we want, we can just give thanks. Yes, Sunita ji, please continue from here. The law of attraction. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you've received it. If it has never occurred to you before you use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Yes. So, my dear friends, as I always tell you, remember these lines. जैसे आप दूसरे कार्ड बनाते हैं, make this one also. Whoever has gratitude now will be given more in the future. Directly proportionate है. जितना मैं कर रही हूँ, उतना बढ़ रहा है. ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा. And he or she will have an abundance. Abundance of everything. Abundance of anything and everything. See, your law of attraction is working. Means how? अब करना क्या है? Now, whatever I want, for example, I want, suppose I am interested to write a book, right? I am interested to write a book. What should I do? I have to form that image in my mind that I have written a book. This is how I have written a book. These are the pages. This is what my topic is. These are the things I will write on it, write in it. So the easiest way, and then the best and the easiest way is to say thank you. Thank you before I have written it. So this is what I'm saying. This is a magical thing we have now. So whatever is my desire, I have to think in. So therefore, the first line when we said imagination, generally the human mind it has a tendency to imagine all the things which are not very convenient, not very happy.
very fast. Whereas to think about those things which the person wants. I mean, if you know about the power of visualization, it is altogether different. But otherwise, आप देखिए कोई घर में लेट आता है तो क्या विजुअलाइजेशन कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. So therefore, ये अब हम ऐसा करेंगे with our dreams and desires that we will think of that. Yeah. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. One thing, my dear friends. For example, okay, somebody has, we have people in our life where, we feel नहीं यार इसने मेरे लिए बहुत किया है, मुझे तो इसके लिए करना है. So my attitude, my behavior towards that person is different. Why? Because he has done something for me. Whereas there is another person, my attitude may not be same as with the person who has done something great or good for me. Right? यहाँ पर अब क्या हो रहा है? This is what is our gratitude is going to that person. Why? Because the person has done something for you. Whereas I can be good to the other person as well. But हम क्या करते हैं? हम सोचते इसने मेरे लिए किया है तो मुझे करना है. इसने मेरे साथ ऐसा करा था, अच्छा नहीं करा था, मैं इसके साथ अच्छा क्यों करूं? अब आप जब किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया हमारे हिसाब से, वरना तो इस दुनिया में कोई गलत नहीं करना चाहता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है. अब उस इंसान ने उसको जितना अच्छा लगा था उसने करा मेरे साथ, मुझे लगा कि ये तो अच्छा नहीं किया. आई हैव कंप्लेन्स अबाउट दैट थिंग. नाउ इसमें कितनी चीजें बिगड़ गई? एक थॉट, ओनली वन थॉट. एक तो मेरी एनर्जी बिगड़ गई, मेरा वाइब्रेशन जो है वो लो चला गया. So when I am vibrating low, my attraction would be वो जो बेकार चीजें होंगी उसी की. Law of attraction is working all the time. Secondly, मैंने अपना mindset बिगाड़ा. Right? Mindset बिगाड़ा. Third, very important. क्या मेरा behavior, क्या मेरा कुछ basic nature है या नहीं है? Should I decide my behavior depending on how Abhijit ji is behaving with me? How Sunita ji is behaving with me? तो फिर आज अभिजीत जी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छी हूँ. सुनीता जी ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी हूँ. कल अभिजीत जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे हिसाब से गॉन, काटो सुनीता जी को. नो. तो मेरा बेसिक नेचर क्या है? हाउ डू आई नो? सो द बेसिक नेचर, व्हाट डू आई मीन बाय द बेसिक नेचर? आप लोगों ने, सब लोगों ने, ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल मैं हमेशा कोट करती हूँ. आप सबने गिरगिट देखा है. वो जिस पेड़ पर बैठेगा, जैसी पत्ती होगी, जैसा वो बार्क होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है. उसका कोई अपना कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है कि गिरगिट इस कलर का होता है. उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है. वो जिस कलर के साथ होता है वो कलर चेंज कर लेता है. क्या मैं एक गिरगिट हूं? क्या मेरी कोई आइडेंटिटी है? क्या मैं अपना बिहेवियर दूसरों के हिसाब से सेट करूंगी? तो फिर मेरी कौन सी विजुअलाइजेशन, कौन सा इमेजिनेशन, कभी कैसा होगा, कभी कैसा होगा, फिर मैं क्या अट्रैक्ट करूं? अ थॉट टू पॉन्डर. इस चीज पर सोचिएगा. राइट? सो gratitude is something we should have before we do something, not only after we have received something. Yes, my dear.
Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you're fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you're grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. Yes, as you all know, we are governed by the laws. आप चलते हो तो लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको पकड़ के चलती, हम गिरते हुए नहीं जाते, उड़ते हुए नहीं जाते, राइट? बिकॉज हमारी नीचे हमको लॉ ऑफ ग्रेविटी ने नीचे खींच रखा है. ऐसे ही दिस यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन सर्टेन लॉज, right? And then how would the things work out? It is none of our business. We just have to trust. When do we trust? So the whole process, what is happening till now, she is talking about visualization. So jab hum, we are imagination, in our imagination, we are looking at those images, we are looking at those things, and we are offering all our gratitude. We are just coming up to that vibration. We are coming to that positive mindset and coming up to that higher level to attract it. आपको भी पता है यूनिवर्स में क्या चाहिए, सिर्फ एक थॉट. और माय डियर फ्रेंड्स, थॉट हम ही डालते हैं. किसी को नहीं पता चलता मैं अगले सेकंड में कौन सा थॉट डालने वाली हूँ. But everything moves according to our thoughts. So likewise, as he said, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you. How? We don't know. We need not know also. आपके पापा, आप जब छोटे थे, आपने अपने पापा मम्मी से रोज नई फरमाइश की थी ना? हमने भी की, आपने भी की होगी, हम सब ऐसे थे. आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, जैसे आप बच्चे करते हैं. क्या कभी आपने सोचा कि कल ही तो मंगाया था, पैसे हैं कि नहीं पापा के पास, पापा को कुछ चीजें और चाहिए होंगी ना? दिस वाज आवर आस्क एंड वी गॉट इट. कैसे आई? नॉट आवर प्रॉब्लम, हमने सोचा भी नहीं. सो नाउ व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? यस मैम. At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list that you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you're putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. So my dear friends, हम में से जिसने भी नहीं लिखी है desires, therefore in the very beginning we request you, please write down. Why? Because now at many times आपसे कहा जाएगा अपनी list निकालो. So like today also, if you have written, like I'm sure there are two ways we have written. So there are many things like, for example, health, wealth, or friends, or relationships, or any physical manifestation, हमारे को कुछ और material चीजें चाहिए, anything. So the option is with me. For example, या तो मैं अलग-अलग चीजें मैंने लिखी हैं, या आज की तारीख में मुझे जो visualization करना है, मैंने हर 10 अलग-अलग चीजों को करा है. Another option is, I have, for example, I have to work on one option only, that I want to change my job. Now, if I want to change my job,
If I want the things to change in that particular area, my 10 things would be related to that. For example, मेरी wish तो है कि मुझे job change करना है, right? मुझे जॉब चेंज करना है तो फिर चाहिए क्या? मुझे वो तो बहुत क्लैरिटी चाहिए ना. वही वाला हाल तो नहीं होना चाहिए कि मुझे कहीं जाना है, मैं तैयार होके बस स्टैंड चली गई हूँ, बस स्टैंड पे बैठी हूँ, पर मुझे ये नहीं पता बस कौन सी लेनी है. बस कौन सी लेनी है तो मुझे नहीं पता, तो हर मिनट में बस निकल रही है, मैं देख रही हूँ कि बस में लोग बैठ रहे हैं, बस जा रही है, बस में बैठ रहे हैं, बस जा रही है. मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी बस लेनी है. मैं अपनी डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंच जाऊंगी डियर फ्रेंड्स, कोई बता सकते हैं? No idea. पहुंचूंगी कि नहीं? Not sure. Not sure. I might be sitting there for the whole day on that bench deciding, not able to decide कौन सी बस पकड़ूं. पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो Yeah. सकता है क्या? Yeah, very, very much possible. So dear friends, if I don't have clear desires या clear desire जिसके ऊपर मुझे 10 चीजें लिखनी है, तो now if I want to change my job, where do I want? What do I want? What kind of a job? What kind of industry I like? What kind of designation I want? What kind of place I want? What kind of office I want? What kind of salary I want? What kind of people, boss, colleagues? Everything I can write about it. अब जब मैं इतनी डिटेल्स लिखूंगी उस जॉब के बारे में, डोंट यू थिंक सो इट विल गोइंग टू बी सो सिंपल फॉर मी टू विजुअलाइज. जब मैंने ये सारी चीजें लिख ली हैं, अब मुझे क्या करना है? आपसे कहा जा रहा है कि सामने बोर्ड है और आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना है. आपको पता है इसके कान भी होते हैं, इसके आंख भी होती है, इसके बाल भी होते हैं, इसकी गर्दन भी होती है. एंड दिस इज हाउ द फ्रेम इज. इजी? या. So that is how our desires should be. So now choice is mine कि मुझे 10 अलग अलग करनी है कि एक में ही करनी है. तो यदि एक ही करनी है तो उसमें वो 10 चीजें मेरे पास हैं. How I want that thing to happen. क्या क्या चाहिए मुझे उस चीज में. This is how it should be. So dear friends, this is how it should be. Okay. Yes, Wendy. Uh, Sit down. Sit down at a computer or with a pen and a journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you've received them. Thank you, thank you, thank you for dash, and fill in the blank what with your desire as though you've received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that you're having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures in this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, Last one. thank you, thank you for how easy and effortless our move was. So my dear friends, these are 10 different, the person, Rhonda, she's given as example that these are the 10 different things we are thanking. These are not happened. Let me remind you, dear friends, these are yet to happen, but then this is how. When we are, acha, ye 10 desires uski likhi hui thi na. Therefore, she is able to say thanks to each one. So it is so very important, my dear friends, that we write and then we give thanks. Now, exact college.
if you have visualized that for example, cut off marks, हर बच्चे को पता आता है कि इस कॉलेज में जाने के लिए ये cut off marks है. So now isn't it, or parents also want, no, if I want my child to go to this college, this is what the cutoff is. It is so simple. So now I can visualize and say, thank you, universe, for getting my child 95% marks in exam, and he can go to Oxford University. That's it. Right? In the same way, like when we go for any test, right? अब मैंने आपने सुना भी होगा, when we go for a test और कोई पूछता है कैसा था आपका टेस्ट, अरे कुछ नहीं निकला यार. आप चाहते हैं कुछ निकले. So isn't it a matter of being grateful कि कुछ नहीं है, I'm very healthy, right? So these are certain things we do. Whenever I tell you, whenever you receive money, तब तो हम करते ही हैं. But if you have a ask, आपको पैसा चाहिए कार के लिए, और पैसा चाहिए ट्रिप के लिए, पैसा चाहिए कुछ नया खरीदना है, कुछ भी हो सकता है वो खरीदने की चीज, आपने पहले थैंक्स कह दिया. और आप चाहते, यू आर इन अ जॉब, योर टारगेट्स मीन्स अ लॉट, तो आपके टारगेट के लिए यू हैव थैंक फॉर डबलिंग द सेल्स फिगर दिस मंथ. तो आपको पता है आपका सेल्स फिगर क्या है. आई डोंट हैव अ पार्टनर, thank you for my perfect partner. The partner can be my life partner can be my business partner, right? So this is how we are going to do it. Yes, my dear. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The Okay. second step, sorry. One second, my dear. No, please don't say that. Now, my dear friends, now let us not get into that energy of deciding और क्या these 3 चीजें होती हैं, ये होता है, ये भी 3 होता है, ये भी 3 होता है. We have to understand the importance of 3 things. Why 3 times? हम लोग रेकी में, दूसरी चीजों में भी, बहुत सारी मोडालिटीज में, हर चीज को हम 3 बार, हम उसकी मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, हम उसको थैंक्स करते हैं, जो भी करते हैं ना, हम उसको 3 बार बोलते हैं. So same way, we have to write it 3 times as it is a number of completion, and you get into that energy. Therefore, we write it 3 times. Thank you, because we are using that magic number of completion, of creation, or that magical formula. So just remember that you have to write 3 times because that is the number of creation which would complete it. That's it. इसके डिटेल में नहीं जाना कि और दुनिया में 3 चीजें कौन सी होती है. Why am I saying that? There is no harm in that, dear friends. But अब हमको जो एनर्जी जिसमें जाना है, 3 बार में जाना है और ऐसा करना है, उसकी जगह मैं लग गई और कौन सी है, और कौन सी है, और कौन सी है, शिफ्ट हो गया. So therefore I am requesting you not to shift there. Okay. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally, answer the following questions as though you received your desire. What emotions do you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire?
Include as much detail as you can in your mind. Yes, you have thanked. First step was, first step से भी first step है, you have your desires written somewhere, right? वो अब अपन रोंडा इस स्टेज पे मान के चल रही है, जब हमको ये प्रैक्टिस सिखा रही है, she has taken it that we have written all those 10 things. I mean, we have written all the things. Out of 10, we will prioritize which 10 we want now. हमारे पास बहुत लिखी हुई हो सकती है. मैंने कुछ याद है, मैंने फर्स्ट टाइम लिखी तो मेरे पास 50 चीजें थी, छोटी 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 छोटी, नॉट नेसेसरी कि सारी बड़ी हो, कुछ बड़ी कुछ छोटी करके 50 चीजें थी, राइट? सो अब उसमें से आई हैव टू प्रायोरिटाइज कि मुझे आज की तारीख में व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ ऑल दिस. तो उसमें मैंने उनको 10 को थैंक यू करके मैंने लिख दिया है. अब व्हाट इज द सेकंड स्टेप? क्या होता है, देखिए, अब मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है. हम सब जानते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी है, ग्रेटिट्यूड की जो सैचुरेशन है, जितना ज्यादा सैचुरेटेड होगी वो फीलिंग, उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी मेरी, और हायर होगी तो हायर मैचिंग होगी. तो उसमें जाने के लिए मैं अभी उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को लंबा रखने के लिए अब मैं क्या कर रही हूं? Now, what emotions did you feel when you received your desire? You wanted to buy the car. Now you have got that car. What is your emotion when you saw that your own car? Or you wanted to change the job, and when you got that you have received your dream job, what was your emotion? Or what were your emotions? This is first thing you have to check. Second was, who was the first person or who will be the first person, because you visualization करना है अपने को. So अब हम किसके लिए करेंगे? So who is the first person I'm going to say or share when I have received this? और मैंने इसको कैसे बोला? My dear friends, मेरे अंदर जितना excitement होगा, उतनी higher vibration होगी. For example, I've got a new job, my dream job. And then I'm calling my husband, किशोर जी मुझे नया जॉब मिल गया है. किशोर जी नया जॉब आ गया मेरे पास, आई वांटेड, कितनी इच्छा थी मेरी, थैंक गॉड. इन दोनों में एनर्जी में बहुत फर्क है. आपकी एनर्जी कहां से है, कौन सी वाली? What is the first thing you did when you received your desire? सबकी अलग अलग हो सकती है. These are the 3 things we have to do with every, जैसे मैंने 10 different desires लिखी हैं. This is what I am going to do. And she's telling us, let us do it. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words, thank you, so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you've completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved forward towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Wonderful. So now we have an option to create our own magic board. What is that magic board? The magic board that will bring all the magic. What is that magic? What do I want to create in my life? मैं desires क्या चाहती हूँ? So, for example, somebody has a job, dream job, somebody has a dream house, somebody has a dream holiday, किसी को अपने बच्चे के लिए कुछ चाहिए, किसी को अपनी health के लिए चाहिए. जो भी मेरी desires हैं, I can cut the pictures and paste it somewhere with bold letters. Thank you, thank you, thank you. मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है आप सब लोगों से. मैंने ये मैजिक बोर्ड बना के
रख दिया, is that sufficient? बना दिया मैंने, नो, नो मैम, क्या करूं? सफिशिएंट नहीं है। डेली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम। क्या चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे? जो हम डिजायर्स लिखते हैं या कुछ भी है, उसको विजुलाइज भी तो करना है मैम। यस, आपने एक बार बना के रखा मैजिक बोर्ड, एंड देन इफ आई से कुछ नहीं मूव कर रहा, होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन उसमें है ही नहीं। मुझे क्या करना है? टू गेट एवरीथिंग वॉट एवर आई डिजायर, to get whatever I want, I have to visualize. For example, मेरी यूरोप ट्रिप और मेरी लंदन ट्रिप और मेरी कहीं की भी ट्रिप, और फॉर दैट मैटर बाजू में, उदयपुर के बाजू में है जोधपुर, मैं वहां जा रही हूँ। What am I doing? Visualization. कैसे जा रही हूँ, क्या लेके जा रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, एवरीथिंग। तो वो मेरी विजुअलाइजेशन है। घर चाहिए मुझे, कैसा घर, कहाँ का फर्नीचर, कितना बड़ा, कैसा इंटीरियर, ये सारी विजुअलाइजेशन मुझे चाहिए। सिर्फ मैजिक बोर्ड बनाने से मेरा काम अधूरा है। Right, my dear friends? So what now you have to remember the 3 steps. We'll talk about these 3 steps. What are we talking about? Yes, my dear. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you've already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Third, using your imagination, answer the following questions in your mind, as though you received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Fourth, finally reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. So I'm sure all of you are very clear what is today's practice apart from count your blessings and the magic rock. Now we already have the desires list with us. Now from that, what are the 10 desires you will write down? Because फिर वो वापस से ब्रेक हो जाएगा, अच्छा इनमें से कौन सी वाली है, नहीं ये वाली थी कि ये वाली थी. No. We want to be very clear about what we want. So if I have a long list of desires, out of that I will sit down, prioritize what are the 10 things I want right now. I will write down on a piece of paper or in the diary itself. And then going to each one of that, I would write, thank you for fulfilling that desire. जो हो गई. And second step is, ये जरूरी नहीं है आप दोनों first step and second step you finish it at one go. What we can do is, you have written all the 10 things. Secondly, now we can do this second exercise later. But I would suggest even if you are breaking the 2 exercises, 10 लिख लो पहले और 10 को, और बाद में 10 को ही आप energize करो. Right? Because when I'm doing it for a longer time, I am training my brain to be there in that situation or in that feeling for longer. Otherwise, our brain, it's a monkey brain. It just runs here and there. So we are training our brain to be there for longer. So these are the 3 questions. We'll send this practice in the group so that it is easy for all of us. These are the 3 questions we have to ask. Why? Because this is the whole thing is the process of visualization. We need to have all these things in front of your eyes moving. And finally, we will reread the list of our desire by saying thank you. Yes.
Fifth one. if you Yeah, if you please. like, create a magic board. Cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board "Thank you, thank you, thank you" in big bold letters across the top. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words "Thank you" for the best thing that happened during the day. Yes. So magic rock goes without saying, without real. I mean, I have to do it. We have to do it, no matter what. It's a matter of few seconds or few minutes. So now I have created a magic board and I have written thank you, thank you, thank you with big bold letters, and we have pasted it somewhere. We can see it often. Now, some people, they say, I would like to have it as my, on my camera, I mean, on the phone or the screen on my, but then, मैंने जब भी करा, I never was comfortable. Why? Some people are, I was not being, क्या होता है, जब भी I start something, मैं उसको जल्दी से brush करके दूसरी चीज करना चाहती हूँ. It's not that computer की screen पे बैठ के मैं time spend नहीं कर रही हूँ. मुझे जल्दी है, अभी class लेनी, अभी ये करना है. So what happens? It is there. But like any other picture, it is there. I am not putting my energy into it. So therefore, put it somewhere, give few minutes every day. What we can do out of that magic board, it is not necessary that we energize everything in one go. We can do in bits and pieces. But क्या कहते हैं, आप जितनी शिद्दत से करोगे, कायनात उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी. तो मुझे क्या करना है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपकी चाहत ही तो यूनिवर्स का कमांड है, उसको यूनिवर्स को करना है, क्योंकि ये आपकी चाहत है. सो रिमेंबर डियर थिंग फ्रेंड्स, इफ आई हैव अ विश, मतलब आई हैव टू आइडेंटिफाई माय विश. इसके 4 स्टेप्स है. आई हैव टू आइडेंटिफाई माय विश, राइट? नाउ व्हेन आई हैव आइडेंटिफाइड माय विश, व्हाट विल आई डू? देन नेक्स्ट स्टेप ऑफ माइन इज टू विजुअलाइज द आउटकम, how I want it to be done. What are the steps? Kaisa? And then I have to uncover the obstacles. What are the obstacles? Now, right now, if I cannot afford a car, but I want that particular car, then this doubt should not come in my mind. That means I'm trying to visualize, but behind it, tap हो रही है कि नहीं, क्या फालतू की चीज कर रही है, ऐसा हो सकता है क्या, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारे खर्चे हैं, कैसे होंगे. तो नाउ क्या हो रहा है, इधर से तो मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, पीछे से मैं डाउट दे रही हूँ, तो वो दोनों चीजें फिर मैच नहीं करती. सो वी विल एंश्योर दैट वी आर नॉट इन डाउट. सो कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको इनिशियली एग्जाम्पल दिया, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक. अब मैंने जब सोचा कि आई वॉन्ट टू राइट दिस बुक ऑन, सेल्फ हेल्प बुक लिखना चाहती हूँ मैं, फिर मेरे को लगा यार इतनी बड़ी बुक के लिए तो मुझे इतने सारे आइडियाज ही नहीं है. उसके बाद लगा आइडियाज तो है, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है. अब वही मैंने बुक सोच ली, वही मैंने ऑब्स्टिकल सोच लिए. So now what is the required thing I have to do? I will sit down and write a sentence. I have written 500 words every day. My 500 words are complete every day. I will put any kind of statement which would motivate me. I'll put it on the mirror, maybe on the bathroom mirror, so that I am reading it every day, and then I'm trying to uncover and then make your plan. You see, if I want to get something, for example, I want a car, okay? अब उस कार के लिए मैं कुछ मेहनत नहीं करना चाहती हूँ. भाई अभी पैसे नहीं है तभी तो नहीं खरीदी है ना, है ना? अब when I am not making a plan to do something more so that I get something more. सिर्फ विश करने से, एक इंसान है उसने 10 दिन से खाना नहीं खाया और वो हिलता भी नहीं है अपने बिस्तर से, और उसको चाहिए यूनिवर्स मुझे खाना चाहिए, तो उसके लिए काम तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिस्तर से उसको उठना पड़ेगा ना, राइट? सो इन दिस केस आई हैव टू मेक प्लान्स, small goals, small goals, and that is how we will get to our goals. So I'm sure all of you are very clear about today's practice. From today onwards,
अब तक भी नहीं करी है ना, तो आज से करिएगा, एंड सी दैट थिंग रोलिंग इन योर लाइफ. आएगी चीज. मुझे अपने उस ग्रेटिट्यूड को सैचुरेट करना है. अब से 10 जो नेक्स्ट, आज से लेकर नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस आर फॉर दिस ओनली. राइट. तो फिर बाकी की क्या है उसके बाद? देखिए, पहले तो हमको रोंडा ने सिखाया कि आप खड़े होना सीखिए. फिर अब हम खड़े होना सीखे तो उसने कहा जल्दी जल्दी चलना सीखिए. जल्दी जल्दी जब चलना सीख जाएंगे तो फिर वो कहेगी अब टारगेट है उसको करके आओ. और ये टारगेट में यदि आपको, आप जा रहे हो, आप बहुत फास्ट चलते हो, और आपको एक आंटी ने कहा कि बेटा मेरे को सामने से दौड़ के ला दे, तो आप दौड़ते हो तभी तो वो दौड़ के ला दोगे ना. तो जब आप खुद के लिए दौड़ते हो तो ही किसी के लिए दौड़ के ला सकोगे. दैट मीन्स व्हेन यू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, we will get things for others also. The last 8 practices जो हैं, I mean, no, 6, the last 6 practices हैं वो higher level की हैं. We'll talk about them. So there ends with practice. I'm sure we all are very excited to. मैम, जब मेरे बेटे का हुआ था ना मैम, मैंने तो बोर्ड भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ विजुलाइज करती थी अपने मन में, हार्ट पे हाथ रख के ये विजुलाइज करती थी और एंजॉय करती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ, आज मेरे घर में हवन हुआ शादी का, और आज मैं डांस कर रही हूँ, फिर मैं बहू का वेलकम कर रही. ये सिर्फ विजुलाइज मेरे ख्याल से मैंने 1 या 2 महीने किया होगा. Wonderful. यस मैम, और वो सच हुआ. मैंने कोई बोर्ड नहीं बनाया था, कोई डिजायर नहीं, लेकिन सिर्फ विजुलाइज किया था. पावर है सब विजुअलाइजेशन में, बहुत पावर है. मैम है, मैं वेरी गुड. उसका एक एग्जाम्पल हूँ. वंडरफुल. ग्रेट. Anybody else would like to say something, sharing, asking anything you would like? Uh, So, I yes, yeah. So uh, um, I generally don't make a board. I mean, I hesitate because of the fact that कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, my husband has a very वो sense of humor, good sense of humor. तो अगर मजाक मजाक में भी उन्होंने बोल दिया कि ये क्या, what silly things are you doing? मतलब ये generally tells me that whenever I'm doing something and कि he doesn't such a believe in silly that. thing. Yeah. Yeah, yeah. So that is one thing that restricts me from going out and you know completely going totally into it and writing. I'm writing in my diary, but giving it a place on the fridge or where it is easily visible. And if I have that hesitation in my mind that agar bola to it's going to get, so it is going to create, right? So I shouldn't be doing that, just to avoid Very true. getting into that. Yeah. 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 So I can go ahead and visualize and not do the board and all. So it's all right. Does Yeah. See, your visualization, how you visualize, that is very important. देखिए, my dear friends, आपने बहुत अच्छा point दिया सुनीता जी. हम लोग generally we look for validation from what other people will do or will say. Right? मतलब मैं ये चीज, for example, मैंने कुछ करा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा कि इस बार तो मुझे बहुत ठंड पड़ रही है और मुझे कंबल देनी चाहिए किसी लोगों को जिनको जरूरत है. नाउ आई हैव कॉल्ड फॉर दोस blankets and I've distributed. And then I want to tell people, मैं तो हर साल ऐसे करती हूँ. Why am I saying that? Because I want validation from people. Oh, you did such a nice thing. As if आपको नहीं पता ये अच्छी चीज थी क्या? We are into validation. कि लोग हमको कैसे क्या बोल रहे हैं जब मैंने ये करा. और सपोज सम पीपल they help and then they want them, the other people, to say, oh, you are such a nice person, you have helped me. और वो नहीं बोलेगा तो जिस इंसान ने करा वो बार बार बोलेगा. ये वैलिडेशन चाहिए मुझे. तो जब आई एम लुकिंग फॉर वैलिडेशन, सारी खुशी तो अगले के पाले में चली गई. वो बोलेगा तो मैं खुश होंगी, उसने बोला ही नहीं तो मेरी जो एक्ट था उसकी मुझे खुशी नहीं हुई. हाँ, आई वॉन्ट एप्रिसिएशन. हो सच एंड सच पर्सन इज सच ए नाइस पर्सन, सबकी मदद करता है. एंड द पर्सन वांट्स टू हियर दैट. दैट इज द बिग ट्रैप.
We look for validation. So we will not look for validation. Lead our own life. Beautiful question, beautiful sharing, Sunitaji. And I'm so grateful to you for reading also for me. Thank you. Thank you so much, my dear. Thank you so much. How did you feel when you read it? I felt great. It's always a Yes. pleasure. But then, just passive listener and reading, do you think so? There is some difference? Yeah. You tend to take more of it into, grasp much more when you're reading it yourself Yeah. than when you're being read to. Yes. That's the best part of it. Therefore, we encourage everybody to read and be part of it and feel how it, you would feel very different. You'll have a very different kind of a feeling, with that. Chalo, great, great. Anybody to share something, ask something? Okay, so enjoy a beautiful Saturday, dear friends, with all the blessings. Enjoy your day. Be very happy. Thank you. Thank you so much. Thank See you. you tomorrow. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you, everybody. Thank you.